we were discussing human eye, and in that we were discussing the structure of eye. We have the diagram of the eye, and in that the various parts it's mentioned over here, and we were discussing the blind spot. Now what is blind spot? The blind spot is the place from which the optic nerves is started. This is what is the optic nerve. Optic nerves. Now, if let's suppose the image is formed onto this position, if image is formed at this position, the image would not taken up to the mind. Okay? The mind is not going to interpret the image which is formed at this place, because here we were not having any kind of the we can say light sensitive cells present. Okay? Light sensitive cells we will discuss. They are also of two types. The first one will be the rod type, and the other one will be the cone type. These are the two types of light sensitive cells which are present at the back side of the eye, which is called retina. These were present at the retina, which were very sensible for the light or the image. क्लियर? और ये भी दो टाइप के हैं, रॉड टाइप्स एंड कॉन टाइप्स. इसको हम लोग अलग से लेंगे. रॉड टाइप्स लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड कॉन टाइप लाइट सेंसिटिव सेल्स. क्या होता है, क्या काम करते हैं, वी विल टेक इट इन अदर सेक्शन. तो अभी हम लोग लिख रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट ब्लाइंड स्पॉट. नाउ व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट? Whatever be the image forming at this place will not taken up to the mind. यहाँ पर नहीं बनेगी. इमेज बनी तो आपको वो दिखाई नहीं देगी. ठीक है? So just write it down. Blind spot. It is a point at which the optic nerve leaves the eye. It is the point at which the optic nerves leaves the eye. And the image formed at this point, and the image formed at this point is not sent to the brain, is not sent to the brain. Now next is aqueous humor. Aqueous humor. Now this aqueous humor is a transparent liquid. This was a transparent liquid which was filled. कहाँ पर fill किया हुआ है? Between the corona and the transparent lens. Cornea, sorry. Cornea and the lens. Cornea और lens के बीच का जो ये part है, that was filled up with aqueous humor. ठीक है? लिख लीजिए. Sometimes not. Every time this aqueous humor also behaves like a concave lens, because it was trying to capture all the light and allow it to pass through the lens. तो ये कैसे behave करेगा? This aqueous humor is also behaves like a concave lens. ये भी concave की तरह behave करेगा. पूरी light को क्या करेगा? जो भी light जा रही scattered light है, उस scattered light को it will allow to pass through this lens. ठीक है? So this is what is aqueous humor. लिख लीजिए. Between, so write down. It is a clear liquid region. It is a clear liquid region. It is a clear liquid region between the cornea and the lens. Cornea and the lens. Now next is vitreous humor. Now what is this? See, in the eye, between the retina and the lens, this space was empty, and this space was filled with another liquid that is known as vitreous humor. क्लियर? ये लिक्विड कौन सा है? आंख के अंदर का लिक्विड है, जो इस लेंस और रेटिना के बीच का पार्ट है. ठीक है? तो नेक्स्ट लिखिए. द स्पेस बिटवीन द आई लेंस, द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, the space between the eye lens and the retina is filled with another liquid, called vitreous humor. Called vitreous humor. नेक्स्ट आप लिख सकते हैं वर्किंग ऑफ एन आई. नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे वर्किंग ऑफ एन आई. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द वर्किंग.
See, we have an opening from which the light will going to enter into eye, and that is known as pupil. We have already discussed it about this. This is what is the pupil, this is what is the opening. And this opening will be regulated with this iris muscles. Iris is going to contract and expand and allows the light, or it can regulate the amount of the light entering into eye. Sometimes you were outside in the brightness, a glare of light coming inside your eye. तो आंखें क्या होती है, एकदम से बंद हो जाती है ना, क्योंकि एकदम से रोशनी आंखों में जाती है ना. So at that point of time, this pupil size will going to be reduced by with the help of iris. Iris is going to contract and reduce the size of pupil, and that's how he will reduce the amount of light going inside to the eye. ठीक है. Now this light which is coming inside from the pupil will falls onto this retina, the image. See, first of all, it will falls onto this lens, and the lens will create a image on the retina. So retina was at the focus of this lens. Clear? Retina or this light sensitive cells were at the focus of this lens. ठीक है. And the image created by this lens falls onto this retina. Now once the image is formed onto the light sensitive cells or onto the rod and the cone types of the light sensitive cells, an electrical signals will generated, and those electrical signals will be taken up by this optic nerve to the brain. Now see, we always study that the concave lens created a real image which was inverted. So yes, of course, an inverted image is formed at this retina. उल्टी इमेज ही बनती है, ठीक है. बट द माइंड इंटरप्रिटेड दैट एज एन इन्वर्टेड इमेज. तो माइंड उसको पढ़ता है कि ये उल्टी है तो उसकी सीधी कर लेता है, ठीक है. एंड दैट्स हाउ वी विल सी एन परसेप्शन ऑफ द विजन विच वॉज इरेक्टेड. इसलिए आपको सीधी इमेज माइंड में बनाई जाती है, ठीक है. माइंड आपको कैसा दिखाता है कि दैट वी विल गेटिंग एन इरेक्टेड इमेज. दो दिस कॉन्वेक्स लेंस हैज क्रिएटेड अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट द रेटिना. तो जैसे यहाँ पर इमेज क्रिएट हुई, ऑप्टिक नर्व्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उठाएगी, किससे, जो सेल्स ने यहाँ जनरेट किए हैं, एंड दो सिग्नल्स वर बी टेकन अप टू द माइंड, और वो माइंड पे जाएंगे, और माइंड उसको कैसे इंटरप्रिटेट करेगा कि आपको एक इन्वर्टेड इमेज मिली हुई है, तो वो उसका इन्वर्ट करके आपको सीधी करके दिखाएगा. सो वी विल गेट अ विजन, और आपको क्या मिलेगा, विजन मिलेगा. सो दैट इज ऑल वर्किंग ऑफ दिस प्यूपिल. एंड व्हेन वी आर इन द डार्क प्लेस, so when we are in a dark place, then what we needed is a greater amount of the light energy should be inside our eye. So at that point of time, this iris muscles will expanded, the size of pupil will be bigger, more amount of the light is coming from this cornea, and this liquid aqueous humor is also working like a concave lens for this. So the scattered light is also concentrated on this to the lens, and the lens will form a image onto the retina. क्लियर. तो इसलिए क्या होता है, अच्छा एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स अ क्वेश्चन कैन बी आस्क कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू इंस्टेंटली व्यू द इमेज व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ ब्राइट लाइट टू अ डार्क वन. ठीक है, जैसे आप बाहर रोशनी से, धूप से अगर आप मान लीजिए कमरे में आते हैं और अंधेरा है, तो एकदम से यू विल नॉट एबल टू व्यू द थिंग्स इनसाइड. एकदम से आप नहीं देख पाएंगे. इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और मोमेंट्स ऑफ सेकेंड्स टू रियलाइज दैट यू विल एबल टू सी. ऐसा क्यों होता है, एक क्वेश्चन बनता है. वो क्वेश्चन इसलिए बनता है बिकॉज दिस आइरिस मसल्स नीड सम टाइम टू एक्सपैंड एंड टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड व्हेन यू आर एट द आउटर साइड, दिस आइरिस मसल्स स्क्वीज दिस प्यूपिल साइज, उसको छोटा कर चुका था. नाउ जैसे ही आप अंदर आए इन द डार्क रीजन, what you needed is more amount of the light energy which goes inside to the eye. At that point of time, this iris muscles need to be expanded, but it needs some time to expand, क्योंकि वो contract हुआ था, वहाँ से उसको क्या करना है, वापस expand करना है. So this muscles will need some time. So for that purpose only, you are not able to see instantaneously. आपको एकदम से नहीं दिखेगा. You will need some time. आपको कुछ समय लगेगा, so that you will going to recognize the objects in the dark place when you are coming from a brighter place to a darker one. Is this okay? तो ये एक तो इससे क्वेश्चन बनेगा. वर्किंग मैंने आपको बताई थी कि वर्किंग क्या है. सो वी विल एबल टू राइट इट, वर्किंग ऑफ द आई. ठीक है, लिख लीजिए.